हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँ वर्तमान क्लास को। आशा करुँची तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे थिबो एवं निज निजर एग्जाम पाई कि बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करुथिबो। तो वर्तमान आमे मैंने लाइव आसी सारिचे। जदि मोर वॉइस क्लियर अच्छी एंड स्क्रीन मध्ये विजिबल अच्छी देन फर्स्ट टिके कमेंट सेक्शन रे जणै दियो। देन आमे मैंने क्लास टी को स्टार्ट करबा। जेमति कि तुम मैंने जानिछ जे आज मैंने करंट अफेयर किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो जल्दी जल्दी आसे कि क्लास रे जॉइन हो जाओ। ओके, ठीक अच्छे तेज चल आ डेरी न करिके क्लास टी को स्टार्ट करबा एवं हमर फर्स्ट क्वेश्चन टी को देखिबा। सबुर आंसर समस्ते दबा लगी ट्राई करबो। ठीक अच्छे, आसो कि न आसो भूलेले भी चलिबो बट समस्ते आंसर दबा लगी ट्राई करबो। ठीक ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन टी देख कौन रही। फर्स्ट क्वेश्चन टी हमर रही व्हिच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वियना, तेहरान, मस्को, बागदाद। एमानक मध्यरु को माने एमानक मध्यरु को सिटी बा सिटी रे रही जो ओपीईसी रो हेडक्वार्टर वियना रे, तेहरान रे, मस्को रे ना बागदाद रे। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ना वियना। ठीक अच्छे, तो जो मान को आसूची आंसर दियो, जदि न आसूची तो देख। ठीक अच्छे, तो ये हमको क्वेश्चन में पचारि which city is the headquarters of the organization of the petroleum exporting countries बा ओपीईसी रो हेडक्वार्टर को जगह रही ना वियना रे रही। ओपीईसी रो फुल फॉर्म कौन? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक अच्छे, यहाँ हूँ गोटे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो थी कि 13टा कंट्री टोटाल रही। केतेटा ना 13टा कंट्री टोटाल रोचंती। एटा माने यार जो हेडक्वार्टर रही सेटा वियना। वियनाटा कौटी ना ऑस्ट्रिया रे। ओके, ठीक अच्छे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी चलो देखा। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन रही व्हिच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम बाय 2027। व्हिच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एमान को मध्यरो इंडिया रो को पड़ोसी देश अनाउंस करिछि जे 2027 सुधा जो बैंकिंग सिस्टम को इंटरेस्ट फ्री करबा लगी। ठीक अच्छे, तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका ना नेपाल। यार करेक्ट आंसर टी होची कौन ना पाकिस्तान। पाकिस्तान एटा अनाउंस करिछि जे 2027 सुधा जो पाकिस्तान रो जे फिनांस मिनिस्ट्री सॉरी पाकिस्तान रो फिनांस मिनिस्ट्री एटा अनाउंस करिछि जे 2027 सुधा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम को माने कौन ना लॉन्च करेंगे पाकिस्तान रे। ठीक अच्छे, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही देख इंडिया साइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लोन। India signed Economic Development Corporation Fund Loan Agreement for Intelligent Transport System with which country? को country सहित इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन एग्रीमेंट गोटे साइन करिछि। ठीक अच्छे, फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया सहित, फ्रांस सहित ना साउथ कोरिया सहित ना स्वीडन सहित। तो इंडिया साउथ कोरिया सहित, ठीक अच्छे, साउथ कोरिया सहित गोटे एग्रीमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन ऑफ ओवर 245 बिलियन कोरियन माने ओन करिसेंती। ठीक अच्छे, तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? इंडिया एंड साउथ कोरिया बोथ साइन करिसेंती गोटे एग्रीमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन पाई कि जोटा कि 245 बिलियन लगी होइछि। ठीक अच्छे, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखिबा। देन आमर क्वेश्चन रही ए रिसेंट एग्रीमेंट साइंड बाय द यूरोपियन कमिशन टू सेट अप power power line to bring electricity from which country to Europe? Iran, Azerbaijan, Australia, Ukraine। गोटे रिसेंट एग्रीमेंट साइन होइछि यूरोपियन बाय द यूरोपियन कमिशन जार एम होउछि कि किपरि भाबरे सेटअप करा जिवो पावर लाइन टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम व्हिच कंट्री टू यूरोप। को कंट्री रु यूरोप को इलेक्ट्रिसिटी आसवा लगी होइछि। ईरान ना अजरबैजान ना ऑस्ट्रेलिया ना यूक्रेन। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? तो जो लीडर रही अजरबैजान, जॉर्जिया,
रोमानिया एवं हंगेरी रो एमाने मिसिकी गोटे एग्रीमेंट साइन करिसेंती ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल रनिंग अंडर द ब्लैक सी टू कैरी ग्रीन एनर्जी फ्रॉम अजरबैजान। ठीक अछि, तो ऑप्शन बी होची यार एग्रीमेंट, सॉरी यार करेक्ट आंसर। ठीक अछि, एई जो एग्रीमेंट रहिछि एटा इन्वॉल्व करूछि 1100 किलोमीटर 1000 मेगावाट केबल जोटा कि आजरबाइजान रो रोमानिया को आसीबो as part of European Union efforts to diversify energy resources जोटा कि ग्रीन एनर्जी रही away from Russia aimed the Ukraine war। ओके, ठीक अच्छे बुझी पारे आजरबाइजान होची यार करेक्ट आंसर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देख, where is the headquarters of the Theosophical Society located? Theosophical Society रो जो हेडक्वार्टर टा को जगह रही केरला रे, तमिलनाडु रे, वेस्ट बेंगल रे ना ओडिशा रे? तो यार करेक्ट आंसर टी होची कोन तमिलनाडु रे ही रही थियोसोफिकल सोसाइटी रो हेडक्वार्टर। ठीक अछि, तो थियोसोफिकल सोसाइटी केबे फाउंड हेतिला तुम माने जानिथिबो 1875 मसीहा रे हेलेना पेट्रोवान वल्वास्की एवं अन्य मानक द्वारा ए जो थियोसोफिकल सोसाइटीटा फाउंड होता है। यहाँ गोटे वर्ल्ड वाइड बॉडी विथ द एम टू एडवांस द आइडियाज ऑफ थियोसोफी। ठीक अच्छे, तो ये जो द 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी सेटा ऑर्गेनाइज होता कौ जगार एट इट्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इन आद्यार। ठीक अच्छे, यार थीम थिला कौन? द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। कौन थिला यार जो थीम थिला कौन ना आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक अच्छे, बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन टे देखिबा। देन आमर क्वेश्चन रही इंडिया साइंड एंड एक्सचेंज्ड लेटर्स फॉर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम with which country? Australia, UK, USA, Finland. India signed and exchanged letters for young professional scheme with which country? Australia, UK, USA, Finland. UK होची यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, इंडिया एवं यूनाइटेड किंगडम मिसिकी मार्क करिसेंती द प्रवासी भारतीय दिवस बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स टू फॉर्मलाइज द यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। ठीक अच्छे, ये स्कीम अलाउ करुच्ची अप टू 3000 ग्रेजुएट्स इन एज ब्रैकेट ऑफ 18 ରୁ 30 टू गेट ए 2-year वीजा टू स्टडी इन ईच अदर्स कंट्री। ठीक, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देख, which country announced to increase retirement age from 62 to 64 by 2030? Canada, Japan, France, श्रीलंका। को कंट्री मानक मध्यरो अनाउंस करिछि टू इंक्रीज रिटायरमेंट एज, जो रिटायरमेंट एजटा 62 ରୁ 64 को 2030 सुधा बढ़ी दबा लगिका को कंट्री अनाउंस करिछि? कनाडा, जापान, फ्रांस ना श्रीलंका? तो यार करेक्ट आंसर टी होची कौन ना फ्रांस। ठीक अच्छे, फ्रांस रो जो सब एम्प्लॉय मानकर जो एज रही रिटायरमेंट रो सेटा 62 रही जोटा कि 2030 सुधा 64 को बढ़े दिया। ठीक, ओके देन क्वेश्चन टी कौन रही देख, which country has launched welcome crop scheme to sponsor refugees seeking sanctuary in the country? ठीक, वेलकम क्रॉप स्कीम एमान का मध्यरु को कंट्री लॉन्च करिछि? यूएसए, रशिया, चाइना ना इंडिया? तो जो वेलकम क्रॉप स्कीम यूएसए लॉन्च करिछि मन रखिबो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जोटा कि ये जो वेलकम क्रॉप स्कीम टा अलाउ करिबो ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस in the US to sponsor refugees seeking sanctuary in the country। এই जो মুভটা করা যাব বা এই जो স্কিমটা রয়েছে that is welcomed by rights groups as a positive step। Welcome crops will initially apply only to refugees who have already been approved for entry into the US। This is applicable for refugees arriving through the US refugee admissions program। ओके देन क्वेश्चन कौन रही देख, which country introduced international information campaign to discourage refugees from coming to the country? USA, China, Sweden, Indonesia?
देख यार करेक्ट आंसर टी होची स्वीडेन। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी है यार करेक्ट आंसर। तो जे जो स्वीडिश गवर्नमेंट रही से अनाउंस करते गोटे इंटरनेशनल इनफॉरमेशन कैंपेन टू डिस्करेज रिफ्यूजीज फ्रॉम कमिंग टू द कंट्री। तो यार करेक्ट आंसर है स्वीडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, व्हिच कंट्री, देख कहीं भी हेले वर्तमान लाइव ना हो एवं कहीं भी आंसर देना हो जेहेतु, तो से मते क्वेश्चन को आग को बढ़ेबा को पड़ुची। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देख, which country has announced to allot land to Indian industries in Suez Canal special economic zone? साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। एमानक मध्यरु को कंट्री अनाउंस करिछि कोन पई ना टू अलॉट लैंड टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन स्वेज कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्वेज कैनाल रो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रही सेठी कि ना इंडियन इंडस्ट्री माननको लैंड अलॉट कर दिया जाइछि को कंट्री द्वारा, साउथ अफ्रीका द्वारा, इजिप्ट द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा ना जर्मनी द्वारा। तो यार करेक्ट आंसर टी होची कौन ना इजिप्ट। ठीक अच्छे, ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। तो गोटे जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होता इंडिया एवं इजिप्ट द्वारा, जोटा कि होता कौटी गोटे समिट मीटिंग होता से जगह ही होता दैट इजिप्ट प्लान्स टू अलॉट लैंड टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन स्वेज कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इंडियन एवं इंडिया से जगार जाइए मास्टर प्लान कर फॉर द प्रपोजल एंड इंडिया हैज ऑफर टू एनकरेज इट्स कैंपेन्स टू अंडरटेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बा WHO recently urged Southeast Asian countries to take urgent measures against which disease? WHO recently साउथ ईस्ट एशियन कंट्री उपर किना माने अर्जेंट मेजर माने फोकस करिछि साधारणतः कौन पाई कि को डिजीज पाई कि पोलियो, मेजल्स, ट्यूबरकुलोसिस ना निमोनिया। तो यार करेक्ट आंसर होची कौन ना मेजल्स। ठीक अच्छे, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्ज्ड ऑल नेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया टू टेक अर्जेंट एंड एक्सेलरेटेड मेजर्स अगेंस्ट मेजल्स। ये जो डिजीजटा रही is on the rise as nearly 9 million children having missed vaccination in the past 2 years and 5.3 million children remain partially vaccinated. The measles vaccination cover is significantly reduced after the pandemic. तो मिजल्स जमती कोरोना पर अवस्था ही जेहेतु व्यापी जाइथिला सही एरिया रे किना, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मानकरे WHO तार वैक्सीन लगी उपयुक्त पदक्षेप नहीं। ठीक अच्छे, कहार ना मिजल्स रो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू अलॉट लैंड टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन सुएज कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन? साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। एटा गला परा सेम क्वेश्चन ही पुणी थरे दे देइछि, तो यार करेक्ट आंसर टी हबो कोन ना इजिप्ट। ठीक अच्छे, देन क्वेश्चन देख, as per the FAO recent database, which country ranked first in milk production across the world? ठीक अच्छे, तो मिल्क प्रोडक्शन कथा तो आसी तार आंसर हम कौन ना इंडिया। तो जो प्रोडक्शन डाटा अनुसार फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस बा FAO स्टैट। ठीक अच्छे, इंडिया रैंक करिछि फर्स्ट, समग्र पृथ्वी रे इंडिया प्रथम स्थान रे रही मिल्क प्रोडक्शन रे। ठीक अच्छे, कंट्रीब्यूटिंग 24%, total 24% of global milk production in the year 21-22 बा 2021-22 मसीहार जो मिल्क प्रोडक्शन सॉरी फूड एवं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रो जो डाटाबेस निया जाइछि से अनुसार ही यही तथ्य हमको मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही, द टर्म क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी is officially defined in which law or statute? Rome Statute, Statute of the International Court of Justice, Charter of the United Nations, International Human Rights Law. Crimes against humanity एटा रही कौथे ना रोम स्टैच्यू रे। ठीक अच्छे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आर atrocities committed as part of a widespread or systematic attack targeting any civilian population. The term crimes against humanity has been officially defined in the 1998
रोम स्टैच्यू। ओके, ऑप्शन ए हैला यार करेक्ट आंसर। ठीक अछि, ओके देन वेरी गुड। तो आसे जाओ जो माने भी आंसर दौच दियो, किसी असुविधा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देख, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड 30 डेज पेड मैरिज लीव प्लान। व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड, को कंट्री मान मध्यरु अनाउंस करिछि 30 डेज पेड मैरिज लीव प्लान। माने तुम्हें पैसा देकी छुट्टी नहीं पारिबो मैरिज लगी। ठीक अच्छे, तो सेटा करिछि किए ना चाइना। ओके, चाइना इंट्रोड्यूस करिछि 30 डेज पेड मैरिज लीव प्लान इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द कंट्रीज डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। ठीक अच्छे, ओके देन चाइना कौन चाहूँगी जे तार जनसंख्या केवल वृद्धि ही हो, कम न कम हो। ओके देन, अच्छा हाँ पैंडेमिक टाइम रे किना तार जनसंख्या यथेष्ट कमी जाइछि ना। हाँ हाँ ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखा, व्हिच कंट्री announced to invest 7200 crore in उत्तर प्रदेश, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। एमानक मध्यरु को कंट्री अनाउंस करिछि 7200 कोटी टंका इन्वेस्ट करबा लगी उत्तर प्रदेश रे, से होची जापान। ठीक अच्छे, तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ऑर्गेनाइज होता कौ जगार ना, लखनऊ रे होता। ठीक अच्छे, तो लखनऊ रे जो होता जापान से जगह ही अनाउंस करथिला जे 7200 कोटी टंका इन्वेस्ट करिबा जापान उत्तर प्रदेश रे। तो जापानीज कंपनी होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड जोटा कि HMI ग्रुप रही से डिसाइड करथिला टू ओपन होटेल्स इन 30 सिटीज इंक्लूडिंग आग्रा, अयोध्या एंड वाराणसी। तो से लगी ही से तार जो कंपनी रही बा होटेल रही सेटा इंडिया रे किना स्थापन करबा लगी ही कौन ना 7200 कोटी टंका हाँ 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 ठीक अच्छे। ओके, तो 7200 कोटी टंका इन्वेस्ट करिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा, व्हिच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स लिबरेशन डे ऑन मार्च 3 टू मार्क इट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑटोमान रूल, इस्राएल, बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की। तो देख को कंट्री एमान मध्यरु जेमती आमर अगस्ट 15 रे आमे माने आमर इंडिपेंडेंस डे पालन करूचे, सेपरी मार्च 3 जो लिबरेशन डे भाବରେ किना को कंट्री पालन करि थाए, इस्राएल, बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की। तो यार करेक्ट आंसर टी होची के ना बुल्गारिया। ठीक अच्छे, बुल्गारिया तार जो लिबरेशन डे प्रति वर्ष मार्च 3 रे किना पालन करि थाए। एई दिन बुल्गारियन माने फ्रीडम पाइथिले फ्रॉम द ऑटोमान रूल। ओके, आफ्टर ऑलमोस्ट 5 सेंचुरी 500 वर्ष धरिकी से जगह किना ऑटोमान एम्पायर रूल करिथिला। तो ए दिन बुल्गारियन जो वॉलंटियर माने थिले जो माने कि रशियन एवं रोमानियन सोल्डर मानक सहित फाइट करथिले रूसो टर्किश वार रे किना, जोटा कि हेतिला 1877 रु 1878 मसीहा मध्यरे। ठीक अच्छे, तो ए दिन ही पालन करा जाय थे बा मार्च 3 रे ही पालन करा जाय थे बुल्गारियन इंडिपेंडेंस डे। ओके, बा लिबरेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, सिलिकॉन वैली बैंक व्हिच वाज शट डाउन रिसेंटली इज बेस्ड इन व्हिच कंट्री, रशिया, यूक्रेन, यूएसए, यूके। सिलिकॉन वैली बैंक को कंट्री रे थिला, सिलिकॉन वैली बैंक टा यूएसए रे थिला, तुम मैंने जानिथिबो निहाती भाबरे। तो एटा को बंद कौन पई करि दिया जायछि, US regulators have shut down Silicon Valley Bank and taken control of its customer deposits in the largest failure of a US bank since 2008. The firm, which was a key tech lender, was scrambling to raise money to plug a loss from the sale of assets affected by higher interest rates. Silicon Valley Bank faced inadequate liquidity and insolvency। तो एते कथा मन रखिबार नाही, माने जेहेतु तार जे हेड थिले से कौन कि अलग जगह बहुत गुड़े माने कौन इंटरेस्ट रे नहीं आसीथिले, लोन फोन नहीं आसीथिले, जहाँ फल कि से लोक मानकर टंका नहीं कि कौन कले ना से टिके हेरफेर हो गला जो, तो से लगी ही सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गला बा सेटा शॉर्ट हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हैज कॉज्ड विंड्स एंड टॉरेंशियल रेन इन मलवाई एंड मोजाम्बिक। ठीक अच्छे, एमानक मध्यरु को साइक्लोन हेतिला जोटा कि कारण साजिथिला
ପବନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟରେନ୍ସିଆଲ ରେନ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଲୱାଇ ବା ମାଲାୱି ଆଣ୍ଡ ମୋଜାମ୍ବିକରେ। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଡି। ଓକେ, ଫ୍ରେଡି ହେଉଛି ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଡି ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟରେନ୍ସିଆଲ ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଥିରେ କିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ମାଲାୱି ଆଣ୍ଡ ମୋଜାମ୍ବିକରେ କିନା। ଫ୍ରେଡି ଇଜ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟର୍ମ on record as per the authorities. United Nations also announced that more than 11,000 people were affected by the storm, said the United Nations. Okay, UN ଏଇଟା କହିଥିଲା ଯେ 11,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିବ, which country has unveiled plans to buy up to 5 US nuclear powered submarines? France, India, Australia, Ukraine। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ଅନଭେଲ୍ କରିଛି ଯେ ସେ ୟୁଏସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ସବମେରିନ୍କୁ କିଣିବ ବୋଲିକା? ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁକ୍ରେନ୍। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅନଭେଲ୍ କରିଛି ପ୍ଲାନ୍ସ ଟୁ ବାଇ ଅପ୍ ଟୁ 5ଟା ୟୁଏସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ସବମେରିନ୍କୁ ଦେନ୍ ବିଲ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ମଡେଲ୍ ୱିଥ୍ ୟୁଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡର ଆନ୍ ambitious plan। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଦେନ୍ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଦେନ୍ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, who is the first ex-president of the United States to be charged with crime? ନିହାତି ଭାବରେ ୟାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯିଏକି ଫର୍ମର ୟୁଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ becomes first ex-president to be charged with crime। ଠିକ୍ ଅଛି, he will be charged over hush money payments made to a porn star just before the 2016 presidential election। The former president is also being investigated and several other cases. They include probes into his role in the US Capitol riot of January 2021, his efforts to overturn his loss in the state of Georgia in the 2020 election, and his handling of classified documents after leaving office। ओके, तो यहाँ तुम्हें मैंने मन रख डोनाल्ड ट्रम्प का संपर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही? इदाहो which was seen in the news is a state of which country? इदाहो को कंट्री रथिला? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी। तो इदाहोटा थिला को कंट्री ना यूएसए रथिला। ठीक अच्छे, तो इदाहो होची गोटे रॉकी माउंटेन स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स जोटा कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस होईची एन एबॉर्शन ट्रैफिकिंग लॉ टू रेस्ट्रिक्ट ट्रैवल फॉर एबॉर्शंस। ठीक अच्छे, तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देख, Ulullar declaration which was seen in the news is related to which country? Okay, ये जो Ulullar declaration ହେଇଛି ଏଟା କୋଉ कंट्री सहित रिलेट करुଛି ନା କତାର ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ 4th ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା between the delegates of UAE and Qatar। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ଆବୁଧାବିରେ। ଆବୁଧାବିରେ ହେଇଥିଲା to follow on the implementation of the Ulullar declaration। ये जो 2021 resolved the unity and the strengthening among GCC countries। ठीक अच्छे, तो ये जो डिक्लारेशन टा साधारण गोटे ताकू कौन कह जाए माने एकता एवं जो कौन शक्ति एवं एकतार गोटे सौम्य रूप बोलिका ताकू दिया जाइछि ए भलिया अलुला डिक्लेरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड एंटी टेररिज्म बिल टू रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट? ओके, श्रीलंका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। Which country has recently passed anti-terrorism bill? Anti-terrorism bill श्रीलंका पास करिछि, मन रखिबो श्रीलंका पास करिछि बा इंट्रोड्यूस करिछि रिसेंटली टू रिप्लेस द
ड्राकोनियन प्रिवेंशन ऑफ अछि तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन रही देखो Incident and Trafficking Database by ICDB is the information database of which international organization? World Bank, Bank of International Settlement, International Atomic Energy Agency, Central Bureau of Indirect Taxes and Excise. Incident and Trafficking Database. ओके तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? यार करेक्ट आंसर टी होची कौन ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक अच्छे ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा देन आमर क्वेश्चन रही विंड हॉक डिक्लेरेशन which was seen in the news is associated with which field को field रू आसुची wind विंडोइक डिक्लारेशन एटा एनवायरमेंट रो प्रेस फ्रीडम रो फाइनेंस रो ना पॉलिटिक्स रो एटा होची प्रेस फ्रीडम रो। ठीक अच्छे जोटा कि आडप्ट होता 1991 रे जोटा कि प्रोवाइड करी थाए 19टा प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट प्लुरालिस्टिक एंड फ्री प्रेस। एटा होची गोटे आडप्टेशन सॉरी आडप्शन जोटा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जोटा कि मे 3 रे किना पालन करा जाय थे 2023 से किना मार्क करिछि द 30th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा which is the first US state to ban fossil fuels in new buildings? नुआ बिल्डिंग मानकर फसिल फ्यूल को यूज करा जिवो नाही तो एटा को किए बैन करिछि प्रथम करिकि फर्स्ट यूएस स्टेट किए न्यूयॉर्क चिकागो बोस्टन ना डेट्रॉइट ना किए से होछि न्यूयॉर्क। ठीक अछि न्यूयॉर्क बान करिछि जो फर्स्ट स्टेट हिसाब रे यूएस रो टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इन न्यूएस्ट बिल्डिंग्स इन ए विक्ट्री। ठीक अछि ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देन हमर क्वेश्चन रही which country imposed the title 42 order for title 42 कहार रशिया यूएसए यूक्रेन इटली तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम एटा होची यूएसए। ठीक अच्छे यूएसए होची यार करेक्ट आंसर। तो जो टाइटल 42 ऑर्डर रही एटा इम्पोज होता बाय द Trump administration in 2020 to allow US authorities to expel migrants to Mexico without a chance to seek US asylum। तो यार करेक्ट आंसर मन रखिबो USA। MiG-21 जेट was designed by which country? जो MiG-21 जेट रही सेटा इंडिया रशिया फ्रांस यूएसए कहा द्वारा डिजाइन होइछि ना रशिया द्वारा डिजाइन होइछि। MiG-21 माने कौन द माइकोयान गुरेविक MiG-21 इज ए सुपरसोनिक जेट एटा गोटे फाइटर जेट एवं इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट जोटा कि डिजाइन होइछि द माइकोयान गुरेविक डिजाइन ब्यूरो इन द सोवियत यूनियन। तो यही एयरक्राफ्टा दैट वाज इंडक्टेड इन इंडिया in nearly 1960s the Indian Air Force is currently planning to phase out the remaining three squadrons of these fighter jets after numerous crashes and accidents। तो MiG-21 जेट जोटा रही है रशिया द्वारा ही डिजाइन होइछि मन रखिबो। व्हाट इज द नेम ऑफ द आई डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ द बैक्टीरियम क्लैमाइडिया ट्राकोमाटिस। तो यार करेक्ट आंसर टी होची कौन सेटा होची ट्राकोमा ऑब्वियसली ट्राकोमा ही होची तार करेक्ट आंसर। ठीक ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा चलो रोनाल्ड रेगन इज द नेम ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ व्हिच कंट्री? रोनाल्ड रेगन एटा को कंट्री रो गोटे एयरक्राफ्ट अटे यूके यूएसए कनाडा अर्जेंटीना। तो यहाँ हूँ कहार ना यूएसए रो गोटे एयरक्राफ्ट। ठीक अच्छे यूएस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट जोटा कि कैरियर रही है तार ना रही रोनाल्ड रेगन विल स्टॉप एट सेंट्रल वियतनाम स्पोर्ट सिटी ऑफ दानंग is a rare visit for a US warship to the Southeast Asian nation। Next question रही which country amended its election act to limit the disqualification of lawmakers to 5 years with retrospective effect? श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान म्यांमार। तो यार करेक्ट आंसर टी होची पाकिस्तान। ओके
Which union ministry presented the inaugural report on critical minerals for India? Ministry of Mines, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Home Affairs, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. को यूनियन मिनिस्ट्री एमानक मध्यरु प्रेजेंट करिछि द इनागुराल रिपोर्ट कहा उपरे ना क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया. तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? यार करेक्ट आंसर टी होची मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑब्वियसली. ठीक अछि, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होची यार करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन देखो, नेशनल डिफेंस mobilization offices are associated with which country? India, China, Japan, Russia. तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? ऑब्वियसली चाइना हो यार करेक्ट आंसर. द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना has recently created national defense mobilization offices and introduced significant revisions to its reserve personnel law. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्ल्ड्स फर्स्ट chronic traumatic encephalopathy has been diagnosed in which country? USA, Australia, UK, India. तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑस्ट्रेलिया. ठीक अछि, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर. ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट have diagnosed chronic traumatic encephalopathy by CTE in a professional female athlete, marking the world's first such diagnosis. ठीक अछि, ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही, विच ग्रुपिंग हैज कॉल्ड फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? एशियन, सार्क, एससीओ, G20. तो यार करेक्ट आंसर होची एससीओ. ओके, बा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ रो फुल फॉर्म, जोटा कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन द वर्चुअल समिट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही, which body released the report titled Uncovering the Invisible Successes and Challenges for Wildlife Crime Prosecution in Europe? तो यार करेक्ट आंसर हबो लाइफ स्वेप प्रोजेक्ट. ठीक अछि, द रिपोर्ट टाइटल्ड जहार ना कोन रखा जाइछि अनकवरिंग द इनविजिबल सक्सेसेस एंड चैलेंजेस फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रोसिक्यूशन इन यूरोप. ठीक अच्छे, हाइलाइट्स दैट ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम्स इन यूरोप गो अननोटिस्ड. माने किछि किछि जो वाइल्ड लाइफ रही हत्या कर दिया जाउछि एवं माने केही हाबुडर ही पड़ू नाहंती. तो सेथि लागि ही लाइफ स्वाइप प्रोजेक्ट गोटे लोकलोचन को आसीछि यूरोप रे. नेक्स्ट क्वेश्चन रही, which city has announced the inaugural future sustainability forum? Ahmedabad, Dubai, Newark, Rome. Which city has announced the inaugural future sustainability forum? यार करेक्ट आंसर टी होची कौन ना दुबई. ठीक अच्छे, ओके. देन क्वेश्चन देखा, which country has employed the cabbage strategy? cabbage strategy को कंट्री करिछि ना चाइना करिछि. नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर, व्हिच कंट्री इज अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर आइगल शेलोनार ऑपरेशन? तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? से यूएसए. ओके. देन क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज हैंडेड ओवर 105 एंटीक्यूटीज टू इंडिया? को कंट्री 105टा एंटीक्यूटी इंडिया को देछि? से यूएसए ही देछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, which Gulf city has recorded a rise 23% rise in visitor arrivals from India? एटा होची कोन ना दुबई. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन रिवर which was seen in the news flows across which city? को सिटी दे की सेन रिवर प्रवाहित? सेटा होची पेरिस. Jim Scaya has been elected as the chair of which institution? Jim Scaya IPCC रो chairman होइचंती. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, IPCC रो फुल फॉर्म कोन? इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, Iceberg Alley which was seen in the news is located in which country? Iceberg Alley कोठी रहिछि ना कनाडा रे रहिछि obviously. तो एटा होछि गोटे massive iceberg was observed drifting towards Newfoundland, a Canadian island recently. The location known as Iceberg Alley frequently witnessed such colossal ice formation and was
where the Titanic struck an iceberg and sank in 1912. Which country has objected to the incorporation of the Sanskrit phrase uh, Vasudhaiva Kutumbakam in the G20 logo? Bangladesh, China, Iran, Russia. Co country ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ has objected to the incorporation of the Sanskrit phrase Vasudhaiva Kutumbakam in the G20 logo, that is China. Okay, China object କରିଥିଲା to the incorporation of the Sanskrit phrase Vasudhaiva Kutumbakam and chosen as the Indian presidency's G20 theme in various G20 documents, including the G20 Energy Ministers Outcome Document and Chair Summary on Energy Transitions released last month. ठीक ଅଛି. Okay, the next question ରହିଛି Luna 25 is the lunar mission of which country? Luna 25 ଟା କାହାର ଥିଲା? ସେଟା ହେଉଛି ରଷିଆର. ଠିକ ଅଛି, ରଷିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ lunar mission. In nearly 5 decades, Luna 25 crashed into moon a day after it had spun into uncontrolled orbit. तो Luna 25 ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ପରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା. ଓକେ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ମୁନ୍ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ହିଁ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା. ଏଇଟା ଥିଲା ରଷିଆର ପ୍ରଥମ lunar mission. Which international development financial institution has a plan to issue Indian rupee bond? ସେଟା ହେଉଛି କିଏ? ଆମର ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ বা NDB. Okay, New Development Bank by NDB, founded by BRICS countries, is planning to issue its first Indian rupee bond by October 23 মানে এই মাসরে. ঠিক আছে, this was mentioned by the bank's chief operating officer ahead of the BRICS 2023 summit in Johannesburg. ঠিক আছে, next question ଦେଖିବା. Which country is developing AI powered ghost shark submarines? तो यार करेक्ट आंसर होची कौन ना ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट था हमारा लास्ट क्वेश्चन रही which country signed 12 agreements including 7 MOUs with China to enhance bilateral cooperation in various sectors. এটা হলা কিଏ ନା ବାଂଲାଦେଶ. ଚାଇନା ଏବଂ 12ଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି including 7 MOUs to enhance bilateral cooperation in sectors including trade, road connectivity and information technology after Premier League Qiang and Prime Minister Puspa Komal Dahal Prachanda held talks in Beijing. ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପା କମଲ ଦହଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ସେ ଯାଇକି କଥା ହେଇଥିଲେ ବେଜିଂରେ କିନା. during the meeting, the two leaders comprehensively reviewed the bilateral relations and expressed satisfaction over the close and cordial ties subsisting between the two countries. Okay, that is China and Nepal. Okay, then next okay, ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯାହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ. ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତ ପଚାରିପାର, ନଚେତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେମାନେ ରଖିବା. ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଦେନ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିଅର୍. ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.